Hey, hello guys, welcome to IQ Civil Science Academy, a great coach transforms life. So today we are going to discuss about the technology behind driverless car or the technology behind automatic car and issues or ethical issues associated with the technology, or you can take it in a way कि what is artificial intelligence and what ethical issues can arise because of use of artificial intelligence. So this topic is more important for your mains examination. This topic will be covered by me, Dr. Sachin Kadam, faculty at IQ Civil Science Academy, Guwahati. So let's start. Everybody knows कि Tesla of Elon Musk, they came up with the driverless car. Okay, and this driverless car is already in use in USA. Now if you search Google, so you will come across this issue in USA, driverless car and issues, recent news. If you search this, so driverless car, GM Cruise to deploy fully driverless car in San Francisco. ड्राइवरलेस कार टेस्ट परमिट कैलिफोर्निया में मिला है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और अब अगर ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो फिर उन एक्सीडेंट के केस में हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? दैट इज द मेन इशू दैट इज अराइजिंग विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ, ये देखिए, ड्राइवरलेस कार एक्सीडेंट. Okay, so there is a issue ki whose fault. You can see here driverless car accidents and whose fault. This is a very big issue if you start using driverless cars at large number. This is one example. As we introduce driverless cars more and more ethical and legal issues will arise, and UPSC will ask you how introduction of technology will create ethical issues. You are getting me? So उसके according हमें इससे deal करना पड़ेगा. तो let's see what are the ethical issues associated with the Tesla's autopilot or driverless car. So here you can see autonomous vehicle manufacturer Tesla faces their biggest challenge since the launch of autopilot in 2015, as a series of lawsuits and criminal cases over fatal टेस्ला एक्सीडेंट्स हेड टू कोर्ट. तो अब देखो, अगर मैं कार चला रहा हूं और मेरी वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल. बट व्हाट इफ नो ह्यूमन इज ड्राइविंग अ कार, एंड इन दैट केस if that car kills some pedestrian, so other human being, who is responsible? It is a big legal issue, right? So what exactly autonomous vehicle is? Though we drive our cars, if you observe your own car, there are so many autonomous or automatic features in your car. Okay, so what are autonomous vehicles? A driverless car is a vehicle which can sense its surrounding environment and it can navigate without human input. Means this car can travel on the road without any human involvement because this car can sense its surrounding environment. It combines multiple sensors and techniques to perceive their surrounding like radar, laser light, GPS, odometer, computer vision and many more. Like there will be cameras fitted on all sides of the car that will act as a vision of the car. Then if you observe, I will show you how a machine here. Now if I go to the Google, what is the meaning of driverless car? तो मुझे बताइए अभी. According to TechTarget, a self-driving car is a vehicle that uses a combination of sensors, cameras, radar and artificial intelligence. Here you can see कि in this case इस कंप्यूटर ने मैंने जो बोला ना वो सुना. मतलब क्या हुआ इसका? अ मशीन कैन सी by using camera, a machine can see
By using voice recognition, machine can hear. मतलब ये इसे विजन भी है, मशीन को हियरिंग कैपेबिलिटीज भी है. देन आपने देखा होगा आपके कार के बैक साइड में ना कैमरा होता है, और अगर पीछे कोई ऑब्स्टेकल आता है व्हेन यू आर पार्किंग योर कार, तो इट मेक्स साउंड, राइट? तो इट मींस इट कैन सेंस द ऑब्स्टेकल. तो इस तरह से आप अगर सारे के सारे सेंसर्स अपनी कार को दोगे, तो दिस कार कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन, रियल ह्यूमन, और उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कार और ऑटोनॉमस कार और ड्राइवरलेस कार. क्लियर? उसके लिए अलग अलग टेक्निक हम यूज करेंगे: रडार, लेजर लाइट, जीपीएस, ओडोमीटर, कंप्यूटर विजन एंड मेनी मोर. सो दिस इज ड्राइवरलेस कार. Now here you can see this driverless car can perform environment mapping. उसके अलग अलग रीजन में आप देख सकते हो, फ्रंट में एनवायरनमेंट मैपिंग की कैपेबिलिटी है, बैक में एनवायरनमेंट मैपिंग की कैपेबिलिटी है, रियर में भी एनवायरमेंटल मैपिंग की कैपेबिलिटी है, दोनों साइड, राइट? और इससे ये क्या करती है, अपने सराउंडिंग को सेंस करती है. लेन डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सराउंड व्यू और डिजिटल साइड मिरर, and then a rear view mirror and many more, rear collision warning. So there are many technologies that we are using to provide sense of the surrounding environment to a car, that include long range radar, lidar, light emitting light detection and ranging, then camera, and short and medium range radar. So by using all these, we can ensure that car can sense the surroundings, and that will help car to become driverless. So what are the benefits of autonomous vehicle? Number one, it will decrease ह्यूमन स्ट्रेस. देखो आप जब ड्राइव करते हो ना, मैंने खुद गाड़ी ड्राइव की है, व्हेन यू आर ड्राइविंग, तो आपके अगर दिमाग में कोई और चीज चल रही है ना, दैट कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट. ड्राइविंग करते वक्त आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन कार और फ्रंट में ही होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ड्राइव अ कार विदाउट एनी एक्सीडेंट. बट कार ड्राइव करते वक्त इफ समवन ओवरटेक्स यू रैशली, तो आपको स्ट्रेस आता है कि नहीं? क्या लोग है, कैसी गाड़ियां चलाते हैं, हम कहते हैं ना. सो दैट कैन क्रिएट अ स्ट्रेस. लेकिन नाउ इफ यू आर नॉट ड्राइविंग, तो ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज योर स्ट्रेस. देन if driverless cars are there, it will lead to the lesser traffic and congestion on roads, क्योंकि वहां पे रोड रैश के इंसिडेंट कम हो जाएंगे. थर्ड, when you are driving, that time is a waste for you. जैसे लोग, बड़े बड़े लोग ड्राइवर क्यों रखते हैं? क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी वो काम कर सके. लेकिन अगर आप खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो इन दैट केस that time of yours is unproductive time. So if we have autonomous vehicle or driverless car, it can save unproductive driving time. Then because this car is artificially intelligent, it is pre-programmed, so this car will not overtake, or it will not cross the red signal. Means this car will follow the traffic rules. So increased traffic rule following. And fifth, decrease in accident due to human error. So these are some benefits of autonomous vehicle, but there are some issues as well. Now what are the ethical issues involved when you are using driverless car? Number one, accountability. In the case of any crash, it would arise an issue of accountability, whether the car owner would be accountable or the manufacturer of that vehicle. क्योंकि car owner was not driving the car, that car killed some pedestrian, because maybe there is a issue with the manufacturing of the car, because car owner was not involved in the driving. So who will be accountable for the accidents that takes place because of driverless car? And these accidents are happening. Then law versus ethics. Autonomous cars are made to follow traffic rules strictly, but sometimes ट्रैफिक रूल्स हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज यू आर कैरिंग अ पेशेंट इन योर कार,
and you came to the signal and there is no one at signal, but still a driverless car, if that car sees a red signal तो वो कार रुक जाएगी. Now there is no need to wait at signal if you are carrying a patient in your car. So sometimes we need to compromise the traffic rules so that we can achieve greater good. But these cars, they will not have awareness of these things, so they will strictly follow the rule. So law versus ethics, यहाँ पे रेड सिग्नल ब्रेक करना एथिकल है, दो इलीगल है. लेकिन एआई जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कार है, दे विल फॉलो ओनली लॉ, दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ एथिक्स. आपको मैं एक बता देता हूँ, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स डू नॉट अंडरस्टैंड इमोशन. Artificially intelligent machine do not understand ethics. रेस्ट सारा का सारा इंटेलिजेंस हमने ह्यूमन का इन मशीन्स को दिया हुआ है. बस ये दो तरह का इंटेलिजेंस उन मशीन्स में नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिकल इंटेलिजेंस. सो फर्स्ट प्रॉब्लम और फर्स्ट इश्यू इज अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड इश्यू इज लॉ वर्सेस एथिक्स, थर्ड इश्यू इज displaying human values. When the vehicle finds an injured person or an old lady, will it stop to help them and display the qualities of compassion and empathy? That is a big question. क्योंकि अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो while driving car, if we come across a person on road who needs help, who needs lift, तो वो कार खुद डिसीजन लेके उसे लिफ्ट देगी क्या? That is a big question ना. तो this car will not understand ethics, this car will not understand emotion, and this car may not be able to show human values. So these are some issues which are ethical issues related to driverless car, and they need to be addressed before we introduce driverless car or autopilot car. So will it stop by an accident and act as a good Samaritan if the need arises, or when a critical patient has to be taken to the hospital, you need not to follow the law, you need to reach the hospital as early as possible. तो ये कुछ issues है जो कार, देखो driverless car क्या है? This car can sense its surrounding with the help of sensors which includes long range radar, short range radar, medium range radar, lidar and camera. That is driverless car. The benefits are, it will decrease the human stress, it will decrease the traffic and congestion, it will save unproductive driving time, it will increase following of traffic rules, and it will decrease the accident due to human error. But ethical issues, who will be accountable if there is an accident because of driverless car, whether it is necessary every time to follow law. For example, you are carrying a patient, and is it necessary to wait at the signal even if there is no one at signal, while when you are having a critical patient in your car? The law versus ethics, and will these car able to display the human values, that is giving lift to the old person or patients while they are traveling. These are some ethical issues that are associated with the और driverless car और autonomous car. लेकिन और भी कुछ issues है. Now see, there is an impact on environment if we start using driverless car. What is impact? This will promote vehicle usage at a time when the objective is to reduce vehicles, to reduce greenhouse gas emission. मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं मेरा खुद का बताता हूँ. मुझे मेरे घर से अगर एयरपोर्ट जाना है तो मैं मेरी कार से तभी ट्रैवल करता हूं जब मेरे पास ड्राइवर होगा. व्हाई? बिकॉज मेरे घर से एयरपोर्ट तक कार मैं तो ड्राइव कर लूंगा, लेकिन वापस एयरपोर्ट से घर पे कार आनी भी चाहिए ना, एंड फॉर दैट यू नीड अ ड्राइवर. बट इफ आई हैव ड्राइवरलेस कार, तो इवन इफ आई डू नॉट हैव अ ड्राइवर, आई विल टेक दिस कार टू द एयरपोर्ट. अब अगर ड्राइवर नहीं होगा और मेरे पास ड्राइवरलेस कार नहीं होगी, तो उस केस में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा ना. मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन इन क्लाइमेट चेंज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा.
But if I have driverless car, now I need not to worry about the driver, so I will increase my use of car. And when I increase the usage of car, that actually increases the emission of greenhouse gases. तो ये भी ethical issue ही है. When you are supposed to reduce the emission of greenhouse gases, you are increasing the emission of greenhouse gases. Then अब मुझे बताइए, अगर ड्राइवरलेस कार आ गई तो there are so many people who get employment as driver. All these people will lose their employment because of driverless car, and that is a big human tragedy. So automation versus human livelihood, job loss to drivers without compensatory skill development and job creation. Then it is believed that in the coming future automation will kill 69% of the jobs. And last, see, driverless car is connected to internet, and anything that is connected to internet can be hacked. So ऐसा भी हो सकता है कि someone will hack your car, use that car for bad purposes or bad work, and now that blame will be either on you or on your car, though you didn't use it. So hacking and privacy versus security. There is a problem if a car is hacked and programmed for killing. Also problems related to the privacy of people. So these are some issues that are related to the autonomous car. तो देखो, what is driverless car, you understood. What are the benefits of autonomous vehicle or driverless car, ये भी आपको समझ में आ गया. What are the ethical issues involved or what are the problems involved in using driverless car, ये भी अभी आप अच्छे से समझ गए, right? Accountability, law versus ethics, displaying human values, impact on environment, automation versus human livelihood, and hacking, oblique privacy versus security. But there are some moral dilemmas of self-driving car, ethical issues. पहले तो hacking dilemma, I explained you. Second, program the car to make impartial decisions. Some also argue that the best way for a self-driving car is to make an impartial decision in case of accident. They must not discriminate between humans based on age, gender or other parameters. They should always make a decision that causes least impact. मतलब कार रोकनी है नहीं रोकनी, ये भी तो डिसीजन कार को लेना है ना. तो वो डिसीजन मेकिंग करते हुए दे शुड मेक अ इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, विच इज वेरी डिफिकल्ट. ह्यूमंस को इम्पार्शियल डिसीजन लेना डिफिकल्ट होता है, ये तो मशीन्स है. देन हैकिंग डिलेमा, there is always a risk of a cyber criminal hacking into the car's system to gain access to sensitive data or to carry out a misdeed. Then rightful deciders of the ethics of self-driving cars. Self-driving cars are basically robots that have been programmed using algorithms. So they are most likely to follow set rules or patterns in all cases. और हमने देखा है कि there are sometimes we need not to follow law to make it ethically right. And last, 4, giving control to the driver. One of the biggest dilemmas of self-driving cars is whether it would be right to hand over the control to the driver at the last instant. This will not only raise a question about the ethics of self-driving cars, but also about the ethics of the driver. And fifth, predetermined decisions over random decisions in all cases. Self-driving cars are basically robots that have been programmed using algorithms, so they are most likely to follow set rules or patterns in all cases. और हर बार हर एक डिसीजन हर केस में राइट नहीं होता है. ऐसा हो सकता है कि one decision is right in one case but wrong in another case. So these are some moral dilemmas associated with self-driving cars. Okay. Now, what is the conclusion? As the debate around autonomous vehicles and ethics intensifies due to the increasing adoption of self-driving cars, we hope that strict laws and regulations will be developed that can finally answer the questions in a correct and justifiable manner. So, before we introduce self-driving cars or autonomous cars,
we need to ensure that whatever ethical issues that will arise, or whatever moral issues that will arise, first we need to address them, and then we can introduce self driverless or self driving cars. Okay, clear? So these points are very important for your mains examination. Done? You will get the PDF, so you can go through the PDF and make your answer ready for your mains GS पेपर 3 as well as GS पेपर 4, दोनों में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. क्लियर? Now, Indian government is planning to introduce online voting for NRIs, that is non-resident Indians. Actually, people like me, Sachin sir, आपके अभी कहाँ है पता है? I am taking classes from Jammu, but my name in voting list is in my village, which is in Maharashtra. तो अभी अगर मेरे विलेज में कोई वोटिंग हो रही है तो आई कैन नॉट गो देयर बिकॉज इट विल कॉस्ट मी 3 days प्लस 30,000 रुपीज. तो दैट इज टू कॉस्टली, राइट? तो मैं प्रेफर क्या करूंगा कि नॉट टू गो फॉर वोटिंग, बट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. अगर मुझे ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन मिल जाए तो आई विल डेफिनेटली वोट, राइट? सो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल to amend the Representation of People Act to allow overseas Indians to vote by proxy. मतलब if someone's name is in the voting list of Kerala, but that person is working in Dubai. So Government of India introduced one amendment in which the person working in Dubai will remain in Dubai, but someone else in Kerala can vote for this person. That will be called as vote by proxy. However, bill lapsed with the dissolution of the 16th Lok Sabha. तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था बिहाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल, लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ. इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वोटर फैसिलिटी टू एनआरआईज. तो इफ वी अलाउ वोटिंग बाय प्रॉक्सी और ऑनलाइन वोटिंग फॉर एनआरआईज, तो क्या इम्पैक्ट होगा? अलाउिंग एनआरआईज टू वोट फ्रॉम अब्रोड may see expatriates, a bulk of whom are migrant laborers, mostly from Kerala, Tamil Nadu and northern parts of the country, can emerge as a decisive force in country's electoral politics. So actually हम जैसे कितने सारे लोग वोट करना चाहते हैं, but they can't vote because they can't be at their home or in their village when there is voting, right? So it is good according to me. Now what is remote voting? So remote voting is a method of casting vote which may take place in person somewhere other than an assigned polling station or at another time, or votes may be sent by post or cast by an appointed proxy. तो देखो, मेरा नाम पोलिंग बूथ में है जगह ए पे, लेकिन मैं वोट कर रहा हूं बी पे, तो इसे भी रिमोट वोटिंग कहते हैं. अगर मेरी वोटिंग टाइम है 12th ऑफ जून को वोट करना है, लेकिन मैं कर रहा हूं 13th ऑफ जून को, तो ये भी रिमोट वोटिंग है. या 11th ऑफ जून को, या फिर ये ऑप्शन ऑलरेडी सर्विसेज में जो लोग हैं उनके लिए अवेलेबल है, दे कैन वोट बाय पोस्ट. ठीक है? और someone else is voting in the name of mine, that is voting by proxy. इन सारे मेथड्स को या इन सारे टाइप को हम क्या कहते हैं? रिमोट वोटिंग. ओके. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज प्रपोज्ड टू इंक्लूड remote voting facility in the upcoming 2024 Lok Sabha election, and it will be a great news for me at least. The project is being developed by IIT Madras using blockchain technology. Now, to understand how blockchain technology can ensure a vote will be cast by a particular individual only and no one else by using internet, ये अगर आपको समझना है तो you need to attend my offline classes. ओके, मेरे ऑफलाइन क्लासेस आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तभी आप ये समझ पाओगे. और मेरे ऑफलाइन क्लासेस आपको मिलेंगे IQ सिविल साइंस
एकेडमी के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, दैट इज इन गुवाहाटी। बस आपको इतना याद रखना है, रिमोट वोटिंग के लिए विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड? फॉर रिमोट वोटिंग वी कैन यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओके। Let's go ahead. So what has been done so far to enable remote voting? Number one, Election Commission has been working with IIT Madras on using blockchain technology for remote voting. आपका e-rupee जो आया है ना, that is also using blockchain technology. Then a technical advisory committee has also been formed, which is headed by IIT Bhilai director Rajat Moona. तो याद रखो, Rajat Moona committee is associated with remote voting or online voting. Then it comprises experts from IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Madras and Election Commission officials. A Hindustan Times report quoted Professor Moona saying that the panel is in the process of finalizing its decision on the remote voting machine. We have already presented twice, but now the final presentation is left, he said. तो आपको ये याद रखना होगा कि yes, remote voting is a reality and Indian government is thinking about remote voting very seriously. Voters migrate from the place of their registration to cities and other places for education, employment and other purpose. जैसे मुझे देख लो, I am roaming all over India for employment purpose, तो मैं तो वोट ही नहीं कर पाऊंगा ना ऐसे अगर होगा तो, right? So it becomes difficult for them to return to their registered polling station to cast their vote, said the statement issued on by the Election Commission. Has remote voting been tried in other countries? So yes, remote voting has been tried out in several countries. These were mostly controlled experiments and yielded limited result. और आपके सरप्राइज के लिए रिमोट वोटिंग एनेबल करने से हमेशा आपका वोटर टर्नआउट बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप देख लो, स्विट्जरलैंड में स्टडीज ऑन ऑनलाइन voting's impact on voter turnout have ranged from finding no impact on turnout in Switzerland to everyone's surprise that online voting slightly decreased the turnout. अब देखो, जब आप ऑनलाइन वोटिंग अलाउ करते हो तो सब चाहेंगे कि दे विल वोट थ्रू ऑनलाइन मोड, और ऑनलाइन वोटिंग में हम वोटिंग के लिए फिजिकली जा सकते फिर भी नहीं जाएंगे, और फिर काम में या बिकॉज ऑफ सम रीजन वी विल जस्ट फॉरगेट कि वी आर सपोज टू वोट ऑनलाइन। तो इससे टर्नआउट कहाँ, बेल्जियम में एक्चुअली टर्नआउट कम हुआ, स्विट्जरलैंड में टर्नआउट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। एंड इन कैनेडा online voting increased the turnout but not enough to solve the low turnout crisis। मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज से टर्नआउट कनाडा में इंक्रीज नहीं हुआ इंक्रीज बट नॉट इन लार्ज अमाउंट। स्टडीज ऑफ एस्टोनियन इलेक्शंस suggested that turnout changes due to online voting may favor high income and higher education demographics। मतलब जब आपके वोटर एजुकेटेड है, जब आपके वोटर के पास इंटरनेट कनेक्शन है, और इंटरनेट कनेक्शन जब आपके पास पैसे होते हैं तब मोस्टली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है। मतलब जब तक आपकी इनकम लेवल नहीं बढ़ेगी तब तक आप नॉर्मली ऑनलाइन वोटिंग कंपलसरी नहीं कर सकते। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट इज टाइम इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन वोटिंग फॉर दोज हु आर विलिंग टू वोट ऑनलाइन। ओके, इट डजेंट मैटर दैट पर्सन इज इन द सिटी और नॉट। अगर वो चाहता है कि उसे ऑनलाइन वोटिंग करनी है तो वी शुड गिव द ऑप्शन टू द वोटर्स वेदर यू वांट टू वोट ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर वो ऑफलाइन का सिलेक्शन ऑफलाइन कहता है तो दैट पर्सन विल वोट ऑफलाइन, अगर वो ऑनलाइन कहता है वो ऑनलाइन वोट करेगा, राइट? However, none of these examples should apply to India. Similar doubts were raised when electronic voting machines were introduced. Even आज भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे लोग डाउट लेते हैं। तो इमेजिन करो, जब आप इंटरनेट के थ्रू वोटिंग इंट्रोड्यूस करोगे तब तो सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो हार जाएगी ना, वो तो कहेगी कि इन्होंने हैक किया था
और हैक करके ये जीते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट वी नीड टू टेक एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन trust, take every political party in confidence, and then only we can go ahead with online voting or remote voting. So it is a good initiative. Government of India should introduce online voting or remote voting by using blockchain technology. So just few facts about the online voting or blockchain remote voting, right? इसके बाद जो न्यूज़ है, it is related to the lithium ion batteries. तो मैं बस आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ इसके बारे में। रिसर्चर्स फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर एंड जापान discovered a new anode material which could be helpful in ensuring the life and ultra fast charging of lithium ion batteries. And this new material is a nano sheet, मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, derived from titanium diboride. It is made up of nano particles of titanium diboride, and this anode had an ultra fast charging capacity and a considerable discharge capacity. मतलब बहुत जल्दी चार्जिंग भी होगी और बहुत ज़्यादा देर तक वो चार्जिंग टिकी रहेगी। सो अगर ऐसी बैटरी डेवलप हो जाती है तो इट कैन मेक इंडिया अ लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ओके, सो आपको बस इतना याद रखना है कि लिथियम आयन बैटरीज that are developed with the help of nanotechnology and with the help of titanium diboride can be used to charge batteries fast and increase the operational timing of a battery. So that is it about this news. It is not much important. So दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग कंटेंट है जो आपको कंटिन्यूअसली इस वीडियोस में, हमारे वीडियोस में मिलता रहेगा। बस उसके लिए आपको कुछ और दिन वेट करना पड़ेगा। मेरी पूरी नोट्स रेडी है, तो लेट्स सी कि आपको कब चांस मिलता है ये सब के लिए। यू लीव, आई वुड टू टेल यू दिस इज सिविल एकेडमी कोच फॉर्म्स लाइक वांट of this in PDF format are available on this Telegram channel. To subscribe to this Telegram channel, then IQ Civil Service Academy will be starting our batches from January and 15th January. So I suggest you to call these numbers for registration. Okay, and once you register yourself, you can join our offline as well as online batches so that you can gear up and do your preparation for UPSC and APSC, both the examination. So that's it from my side, guys. Thank you very much. Bye bye, take care, sayonara, see you soon.